அங்க போ. உனக்கு போன்னு சொன்ன. Okay, I guess we are live. Very choppy. So I'm not sure if you're gonna wait for some more people to like join or something, like what's happening. I'm not sure why that happened again.
I'm being told that everyone needs to join through LinkedIn. I'm not sure why, but that's what I've been told. Oh, through the link. Sorry. Okay. Yeah. Whoever wants to like hop on, just needs to click on the link and join. Okay, that was awkward. Just need to wipe down my camera. Yes, nobody in the chat. Oh, what's this music playing? Okay. Okay, no more music. That's very weird. I guess there are like 7 people watching, but I don't see any activity. Nothing's up. I'm just chilling, drinking some tea, and seeing if we can get some debate today, I guess. I want to see myself. So I'm just gonna turn it off. Is there somebody in? Hello. How are you? Long time no see.
I can't hear you. Am I Hello. audible? Yeah, I think. Yeah, I think you're audible now. Hello. What's up? How's it going? It's been quite some time since we last met, I guess. Yes. Yeah, I remember meeting you for the first time at Dadar, uh, like in one of the outreaches. I That think was that's the my first time. first outreach. Ooh, that's quite a history. Yeah, Yes. yeah. Long way. We've come a long way. Yes. सोचा नहीं था कभी कि it's going to turn out to be like this. Yeah. Well, I had some idea, but I didn't like expect whatever happened. So, हम्म। like, yeah. तो जो लोग देख रहे होंगे उनको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट Yeah. So the thing is, like, so I'll just like start because I haven't like started speaking like properly since I joined the live. So I'll just like I guess introduce myself. So my name is Arvind. People call me Appoota. And like that's is my nickname, so that's just what became popular among the community, so that's just what I stuck to. And I've been a vegan since like 2017, and I became vegan after Arvind Animal Activist came to my college to give an interview. I was doing my bachelor's at the time, and after that I became a vegan. And immediately after becoming vegan, probably not even like a few, I'm not sure how long it took, but like almost immediately, you could say. I started doing outreach and different kinds of activism. Street outreach was my primary form of activism at the time. So I used to go with Arvind to outreach and learn from him. And like, yeah, I started doing activism just like that. And it was during one of those marches where I met, not marches, sorry, outreaches where I met Aparajita, and that was her first outreach. So this was probably in like 2018 or something like that, 2017, 2018. Um, yeah, so it's been quite some time. Yeah. you are I think you are missing out something. Sorry, your voice got scrambled a little Okay, bit. so I said you are missing something. Oh, Yes. what what am I missing? So it was not a march. It was 2018, I think, October month. Okay. October. Yeah. And I remember, so Rajeshwar and I used to be friends, and he was not there, and it was Diwali time, and he asked me to go to the outreach all alone, and he called what Pankaj to Pankaj. help me out with the first ever outreach because I didn't know what is outreach and how it looks like, what people do in the outreach. I did not know anything about it. Then I met you there, and I Yeah. remember that we when the outreach got over, we stopped by a juice shop. Yes, I remember. I don't remember what we had though. I think it was like watermelon. And I Was it still watermelon? remember, and I still remember that we were discussing about um, that people, a lot of vegans think that um, they have this statement that everybody should die, all humans should die, leave animals alone. Yeah, That was a strong statement, and I was yeah, sharing that that yeah, I heard somebody saying that it was among group of vegans, and yeah. someone told me that, hey, I hate humans. I literally hate Right. humans. How can you hate humans? You can't hate humans. Yeah,
love animals. I think we were talking on that on the very first Something. day. Yeah, yeah. Right, right. Yeah, I think I can remember something like that. Hmm. Yeah, like it's. I mean, it's been a while, and since then I've like gotten into a lot of disagreements with vegan anti-natalists and all of that stuff. So it's yeah, it's been a ride. Um, yeah, so like I think it's really weird that like a movement that's supposed to be popular amongst the masses is like you know talking about like just getting rid of those masses and like including themselves. So yeah, I don't know. So what do you think now, since it has been so the time has passed now. So what are Yeah, you to that? I mean, what do you think right now about that? yeah, I don't think I my views have changed significantly from that. Like I still don't think that we should go extinct. I think that's like being going extinct is like the last thing that should be on our plates. Yeah. So like even though I kind of agree that like we are doing some like humans as a species is doing quite a few horrible things. The solution I don't think is to just get rid of humans. I think reform is an option, and even though it's a long and arduous kind of journey, I think we should take that journey instead of advocating for just like eliminating. And like one of the reasons why, and this is not like an not the only reason, like but one of the reasons is I don't view veganism simply as humans letting go of animals. I also think of veganism as like a positive, um, commitment towards animals. So even though we have like um, exploited them for all of these years, um, and like the primary motivation is to get us to stop doing that, but like there's also like an additional goal which is to make lives of animals better than what they are right now because nature is not a very like even though we have like rosy notions about nature being like really nice and all of that, for the animals that's not the case. Like the animals are continuously suffering in nature. They are like getting ripped open. They are like starving to death. They are dying of thirst. They are getting diseases, parasites, getting wounded, getting injured. So yeah, getting infections of God knows how many types, and yeah, like it's just through and through, just like suffering. So I think we need to like not just serve as like like not just let go of them, but also help them out. So even though like the negative rights process negative rights in the sense that we should stop exploiting them, that's the first half of veganism, but I don't think veganism ends there. I think we also have a commitment to like we have an obligation to help them out in this situation. So if we go extinct, like that's not happening. Like if we go extinct, animals are just gonna be like suffering through and through. um, this vicious cycle is just gonna continue. Maybe like another species will evolve like higher intelligence or something like that, and then they will subjugate the animals again, and then this whole cycle keeps on continuing, and it needs to stop somewhere. So I don't think getting rid of humans is like a good idea. So yeah, I don't know. Yeah, that's just me. Nice. I think I see a couple of comments. Would you like to Yeah, address I'll some? just yeah, one sec. Um, Also, I'm just curious about this. I had no plan to come live. mm-hmm. I'm just curious if this conversation can go in Yeah, English okay. and Hindi, because I think a Yeah, lot yeah, of people might be comfortable, and I get to hear this a lot of times when I'm taking training sessions. A lot of people come and they say, "Hey, can you explain this in English or Hindi, maybe?" yeah. So, oh, we have somebody here. Uh, I Yeah, we have a comment and we have someone, so I'll just talk to the person and then we can go to the comments, right?
Hello, can you hear us? Yes, I can hear you. Yeah, so good evening. Is there something you would like to discuss? No, I just want to have a feel of what you're discussing first and then ask. Okay. Yeah. I mean, we were just having some light banter about, like, just going back in time and reminiscing about all of the uh, times we have, done activism together. So Okay. I guess we can start. So there is a comment: if eating plants causes crop deaths, isn't it better to kill and eat one large wild animal if our goal is to minimize suffering? Some people claim to just kill one animal and eat nothing with their flesh for the full year. Yeah. So this is quite a bit of a. It's a topic that confuses a lot of vegans, and I'm not sure why. I have some speculations that this is probably because even though we have aligned our values with our actions to some extent, we fully don't understand like what our values are. Um, and So the thing is, at least personally, I'm not sure about what other vegans generally think. I'm not making a claim about what most vegans think or anything like that. But at least for myself, I don't think my value is I think it'll be very simplistic to put um, to say that we just don't we just want to minimize suffering or something like that. I think that's very simplistic. Like for example, my values extend beyond suffering. We can think of um, what are the kinds of things that we find to be bad, and are all of them suffering related, something like that. So if we think about some action, like let's say I'm going to be so let's say there is this person who is who has the capability to just kill someone by just pressing a button, um, and the person that they are going to kill is just not going to feel any suffering, and like this person presses one button and the other person is just gone. um, would we look at that action and say that this person did not do something bad? Because like in this case, like we have built into the hypothetical that there was no suffering. One second. Yeah, sorry. um, yeah, so where was I? Yeah, so if we look at that action of some person just like killing another person with no suffering, would we look at that and say we did something that this person did something bad? I think I would. I'm not sure what most people would say. I'm not sure what other vegans would say, but I certainly would look at that and say कि some कुछ तो गलत हुआ है. um, Yeah, it, I think it won't be fair if we are doing that, even if it's against their consent. Like, how can we decide for somebody? Um, yeah. yeah, it's not fair to decide for somebody else. Like, I, Yeah. I remember this hearing from someone that Hmm. they want to press a button where everything just vanishes. Yeah, I And know. I think it's also about the perception, how we see things, how we look at it. Also about the conditioning of like who's speaking that kind of a statement, and what all things they have been through. I think Yeah. that affects a lot. Yeah, that's true. Generally, like people who have certain attitudes towards life, like they go through certain experiences, they probably develop some kind of like, I don't know, nihilistic attitude towards life, I guess, and that's probably why they sign off. I don't know, I'm speculating, I don't have any data for this. um,
But yeah, like that's probably one of the reasons. Maybe there's like a bunch of other reasons. But the thing is, like, I personally, like, my value is just not suffering. Suffering is definitely within the things of within the set of things that I care about. Obviously I care about suffering, but I also have other considerations. Like I wouldn't call myself like a utilitarian. Like, I don't think suffering and well-being are like the only things that I care about. I mean, uh, will it be possible for you to define those words? I think a lot of people are not aware about yeah, those sure, sure. words. Yeah, sure. Okay, so I'm not sure if I can give like a very precise definition of things like utility and like well-being and suffering. So we roughly know what suffering means, right? There are different kinds of suffering. If somebody pricks you with a pin, you feel pain. That's one kind of suffering. If somebody like insults you and you feel bad, that's another kind of suffering. If you're stressed and like you're working and like something goes wrong, that's one kind of suffering. If you're like if you're ill, like, so you, let's say you have some disease and you having some symptoms, that's one kind of suffering. So we roughly understand what suffering is, and we roughly understand what well-being is. um, we, like, if somebody cracks a joke and we laugh, that's well-being. If somebody gives us a gift, we are happy, and like that's well-being. If I do stuff that I like playing guitar, I like debating, I'm doing that, if I do that, I feel good, and that's well-being. So I can, by ostension, like, if I can just give you examples of what pleasure and well-being and suffering are, and I can convey those concepts. So I think most people would understand what suffering is, and what well-being is. So utilitarianism is like, it's a theory, it's an ethical theory, which says that an action is good or bad if it maximizes well-being. Sorry, it's if it's an action is good if it maximizes well-being, and an action is bad if it maximizes suffering. um, so for example, you can, think of it a bit mathematically. You can say, let's say I just go and uh, prick someone with a pin. So I'm causing them suffering, but I'm not causing them any well-being. So what I did was bad, because like, you can think of suffering as negative numbers and well-being as positive numbers, and then you can do a math, right? Like, you can just add both. You can get a total of like the well-being and suffering, and that's whatever aggregate you get. So let's say I do some action which causes 5 suffering points and it causes 6 well-being points. Then 5 minus 6 is like, 6 minus 5 is like 1. So on the net you're causing like 1 well-being. So under utilitarianism, this action would be permissible. But if there is an action which causes 5 points of suffering but only produces 4 points of well-being, um, the average comes out to like -1. So that action under utilitarianism would be impermissible. So it's just a theory of how we um, perceive, like when we, like, how do we categorize things as good or bad. So a theory that explains how a few people would categorize things as good or bad, or actions as good or bad, is utilitarianism. This is one of those theories. So the opposite, I guess, in one sense, to utilitarianism is something called deontology. And deontology is like a theory which says that good or bad actions are determined by whether you are breaking or following some rule or some principle that you have. So for example, like a classical deontologist would say that murder is always bad, or like stealing, lying, all of these things are always bad. Even if, so let's say, let's take the example of lying. So if a deontologist believes that lying is bad, then no matter how much well-being you produce, they will be committed to saying that you still
should not lie. So even if you lying would lead to some other person getting killed or something like, so let's say I'm hiding someone in my house, and someone like some killer appears at the door and they want to kill this person. No harm will come to me, but if I lie to that person, then this person will be saved. A deontologist would not be comfortable saying that it's permissible to lie. Like a classical strong deontologist would say, no, you should not lie. You should just tell them the truth, and that this person is hiding over here. So yeah, like, so there's deontology and there's like utilitarianism. Um, I fall somewhere in between. I would call myself like a moderate. Okay, so someone in the chat. Yeah, I can talk in Hindi, but a few things I'm not sure how to translate into Hindi. Um, Hello, hello, hello. Yeah, okay. Yeah, so I was just saying that yeah, you can have, so I fall somewhere in between. I like to call myself like a threshold deontologist. So the way I look at things is I value rights, or like rules or rights or principles, those, like, I value them, and I would not violate those rules until some threshold of, you know, suffering is prevented, or some threshold of well-being is caused. um, so that I can probably go into more details if somebody wants. But like, roughly speaking, I'm not a utilitarian, and I'm also not particularly a deontologist. I have both utilitarian and deontic values. um, and how this ties into the entire crop death thing is that people sort of mischaracterize veganism as being something like, oh, we want to minimize suffering. That's not how I look at it. I look at veganism more as like a um, as like a rights based thing. So you could say, the goal of veganism is to extend human, like we have some commonplace human rights, right? So we have the UN Declaration of Human Rights. I would say the goal of veganism is to extend those rights to animals, to non-human animals. I would say that's kind of the goal of veganism. Um, so that's how I view veganism. So it's not the body count that really matters to us. So it doesn't really matter how many beings are dying. Like, that's a proxy. But is the action good or bad? That's like the big question, right? So um, when we think about crop deaths, it's not clear to me that crop deaths are like something that's bad. um, so if you think about like an area of crop, like a crop farm or something like that, there could be some animals that are living there. Again, so this also kind of yeah, this also kind of like ties into like how we handle this. So it kind of depends on how the non-vegan makes the claim. um, like, if the non-vegan makes the claim that, you know, a vegan diet is causing more deaths than the uh, animal based thing, that's an empirical thing. But even if it's like a hypothetical case where one animal is being killed, I don't think that's what most, like, you know, carnivore dieters are doing. But even if we grant it for the sake of argument that, yeah, there's this one animal dying, uh, I would just ask them the same question with respect to humans. So let's say, like, there was somebody who just killed one human and ate for like an entire year, um, and the other option was to like just farm plants and eat them. Like, what would you do? Like, uh, would you say this is like killing one human is better than, like, you know, getting rid of all the uh, just farming and eating them? So that's one thing. And the other thing is, there are certain traits that are true of animals, like in the crop field, which are like not true of um, the animals that are being killed in animal agriculture. And that's, like, you could say that, like, if, like, for example, in one case you have like
let's say insects. There are like different animals. So in crop deaths, you can have like insects dying, mice dying, like maybe some bigger animals dying. But more or less, like the vast majority of deaths that happen in crop fields are insects. And the thing is, it's not clear to me that insects are sentient. Like there's no like there's no scientific consensus that insects are sentient. Um, but there is consensus that cows, pigs, chickens, all of these animals are sentient. The second thing is there like if we don't farm crops, then we are probably gonna drive the entire world into like a widespread famine, and that's gonna be problematic because we're gonna have like a lot of people just dying of starvation because we aren't growing crops anymore. And the other thing is that they like the animals are so pragmatically hard to get rid of from the crop field. So even even if you want to like get rid of them like using non-lethal measures, it's almost pragmatically inaccessible to us. We don't have the technology to non-lethally pick out mice and other small animals from crop fields and then transport them outside. They don't have the technology. So if and also it's not even clear to me that what's happening in the crop field is like even if you're like killing animals, um, those animals kill other animals. So you could, by killing those insects, you could probably be preventing the deaths of other insects. So like all of these factors in combination, like it just doesn't make sense to me to think that whatever is happening in the crop field is bad. Like all of these factors in combination. So like uh, them it's not clear that insects are sentient. It's not clear to me that more animals are dying for crop deaths than for animal agriculture. And it's not clear to me that the it's not clear that we are increasing the net amount of deaths as opposed to decreasing the net amount of deaths. And we don't have pragmatic ways to access it. We don't have pragmatically accessible ways to do it. So all of these things in conjunction, like I'm just not convinced that crop deaths are a bad thing. um, and that's why like I'm okay with crop deaths, and like I'm not okay with stabbing animals and killing and eating them. So I guess that's for crop. I've made a long video about crop deaths. It's on my second channel, Great Teacher Appoota. So it's like it's a huge video which covers systematically like the entire process of thinking about crop deaths, and like from a debate perspective. So I guess that'll be like it'll be good if you can watch that video. Yeah. Okay, so if someone has B12 deficiency and also has hormonal issues like PCOD and finds relief with milk, would you suggest some economical vegan alternatives for them, or should they continue drinking milk? I don't think they should continue drinking milk. If you have B12 deficiency, you can just go to a doctor and they can prescribe you supplements for B12, and you can be rid of um, deficiencies. As for PCOD, again, like, it depends on why you have PCOD, and I don't think there's any evidence that consuming milk is particularly therapeutic for PCOD. I haven't seen the evidence. I'm happy to be persuaded otherwise, but I haven't seen any like long-term prospective cohort studies or randomized controlled trials about this. And even if that is the case, like what exactly is the mechanism by which, you know, um, I guess milk consumption would be mitigating PCOD or whatever. So depending on the mechanism, we can have synthetic alternatives. So yeah, like I firstly, I'm not convinced that uh, PCOD actually helps. Sorry, milk actually helps with PCOD. Secondly, if you have B12 deficiency, just take a supplement. Go to a doctor, get prescribed a supplement. Um, okay. Yo, hello, Rajeshwar. Hi, Appoota, how are you?
I'm good. How are you? Great. So I've been watching this discussion since the beginning. I'm quite enjoying it. And That's nice. yeah, so we have a question. I think it is related to a little related to wild animal suffering as well. Right. If veganism is the only solution to save animal lives and nature. I don't know if I'm that not. is related, but I think since you discussed it and this comment came right around Yeah. that time, might Yeah. be, I'm not sure. Yeah. I'm not sure what. Like. I don't. I don't think I understand the question. So if the person can like clarify what they mean, then I can try to attempt. But like, if I'm to like, if I want to interpret it in some way, like they are asking me like if veganism is the only solution to save animals. I'm not sure. I don't know what that's supposed to mean. Like, if you're talking about like, are there like other solutions which are like compatible with veganism, or like other solutions which are contradictory to veganism? Like, like if the question is like, is there some way in which we can keep on killing animals while saving animals? Like, that doesn't really make sense to me. Uh, but yeah, like if you're talking about animals broadly, we need to start somewhere, and we can start by just like not exploiting animals that we are exploiting. And as we go along, we can also start fulfilling the positive commitments that we have towards animals, like alleviating. Like, we can start with like vaccinating wild animals against infectious diseases. Um, we can, give them like medicines for like parasite control or whatever. Um, yeah, and help them if they're injured. And yeah, like as we go along, hopefully we can have like sanctuaries separated out. Maybe we can feed lab meat to the carnivorous animals. Maybe we can herbivorize the carnivorous animals. Who knows? Like, who knows what science has in store for us? um, but yeah, like I think we can start by just not exploiting animals right now. um, and being vegan would help reduce the demand for animal products, and consequently we can have less people consuming animals. And as we have less people consuming animals, less animals will be bred into existence. Less animals will be killed, and less animals will be eaten. And then as like we move forward as a society, we can have um, those positive commitments that I talked about. We can start fulfilling them. Yeah. So I don't know. Like, I don't know if veganism is the only solution or whatever. Yeah, maybe there's some other solution. I haven't thought about it. Um, but yeah, Definitely a step in the right direction, though. yep. So we have one It's more question. What is your view on other bad things that happen in nature, such as non-consensual intercourse? Would it be a virtue to lower or remove these animals from these habitats? I'm not sure if what's happening there is bad. Um, yeah, yeah, I don't view animals copulating in nature as something that is bad in and of itself. So I'm also like, it's sort of like a loaded question. It's like, yeah, it's assuming that all intercourse that happens in nature is like non-consensual. I don't actually think that's true. And like we can make certain inferences. Like, uh, there's a process in evolution called sexual selection, where like the female partners select for the male partners. Like, the males have to, like, you might have seen documentaries where like the male is like performing elaborate acts, like, generating bird songs, or like, dancing. And that's how like the female selects the best performer to mate with. And there's the good gene hypothesis and all of that in like evolutionary biology. And if there's like a selection process happening between like the female and the male, um, like I don't really see what's wrong with it. Like, if they see, like, I can infer consent from that. I'm sure there is like non-consensual intercourse happening in nature, and those individual instances are bad, but I'm not sure if all of it is bad.
like all of it, in the sense every instance of intercourse is non-consensual. I don't think that's true. But that's an empirical claim. Like we need evidence. So yeah, like yeah. I also remember you discussing about insects being sentient or not. So Yeah. there's a lot of discussion right now about protein and other nutrients from insects, and people are now even Yeah. using cricket floor. So Yeah. if they are not really sentient, if we don't have good reason to believe that they are sentient, Yeah. would you think that it should be morally okay to just eat the cricket floor because supposedly it's good for the Yeah. environment, not causing. Yeah, I'm not convinced of that. I'm not convinced it'll be like morally so you could think of it like, yeah, we don't know if they're sentient, uh, Hmm. but what if they are, right? So like like if we are okay with this, we are also like okay with breeding a lot of these crickets into existence and like eventually just killing them and eating them, right? Like if they have sentience, um, then you have like this conundrum on your hand that you have basically killed so many animals that were sentient. Even though I think the probability is pretty low, like I don't think the literature suggests that the probability is very high. Um, yeah, like there are certain neural structures you need in order to have like a rich experience or whatever. We can get into that. I don't really have the sources on hand, so maybe that's for another day. But yeah, if like but I think we can just take like a precautionary principle. We can get by without eating animals. We can get by without uh, you know without eating crickets. I'm living a life where I'm not eating crickets. And I think my lifestyle is not pretty hard. So at least the diet part. um, so yeah, like we can just take a precautionary principle and not promote that industry, um, unless we come across some evidence for one side or the other. Like if we have one case where we find that crickets are not sentient, yeah, I don't care if you eat crickets, if we have some kind of evidence for that. On the other hand, if we have evidence that crickets are sentient, yeah, you shouldn't eat them. But until we have some kind of evidence, I would be careful. I'm agnostic, but I'll be careful and take a precautionary principle and not kill and eat them. Yeah, until we have good evidence, it's better to err on the side of caution. Yes. And I know that with bees, with honey bees, there is some research which suggests that they Yeah, they can. self-medicate and all of that. Yes. So I think it's better to give them the benefit of the doubt. Yep, I Yeah. agree. अंकल जेफ कह रहे हैं भाई हिंदी में बोलो. बोल ठीक है लेंगे. अंकल जेफ, कोशिश करेंगे जितना हो सके हिंदी में. लेकिन क्वेश्चन बहुत टेक्निकल इंग्लिश में पूछा है इन्होंने. मतलब Yeah. What ethical considerations do you take into account when addressing the potential impact of impact of agriculture and ecosystems and हिंदी में wildlife? समझा दो क्वेश्चन यार. Yeah, I'm just reading it, particularly in the context of large-scale plant-based farming. Okay. सवाल ये है कि जब हम एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कैसा होता है इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर. सो आई थिंक अभी तक हमारे पास जितना एविडेंस है, हमको लगता है कि एनिमल एग्रीकल्चर is way more negative for the environment at this point than it is positive. तो अभी तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं. लेकिन फ्यूचर में if we have more technology, we can make things better.
Are there any other? I think we have someone join, Jatin Arora. जतिन जी आप हैं स्ट्रीम में? हाँ जी मैं हूँ। हाँ, तो आपको कुछ डिबेट, कुछ डिस्कशन है तो आप जरूर आपके आर्ग्यूमेंट्स रखिए। सवाल है मेरे बहुत सारे कई वीगनिज्म से। जी बिल्कुल, पूछिए आप। मैं वीगन हूँ, अभी बना हूँ, 1-2 महीने हुए हैं। अच्छा, वेरी गुड। पर मेरी जो थिंकिंग है वो नॉन वीगन वाली है। मतलब मेरे सवाल कई ऐसे हैं जो वीगन ऊपर है। ओके। मतलब बहुत इतनी पॉपुलेशन है बहुत सारी दुनिया में, और सब जी रही है। सबको सांस चाहिए, पानी चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, रहने को घर चाहिए, जमीन चाहिए, फॉसिल फ्यूल चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, हर एक चीज चाहिए। पर वीगन कैसे उन सबको ठीक कर सकता है कि आप वीगन बन जाए? इतनी पॉसिबल तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो पूरी दुनिया है, उसमें से मुझे नहीं लगता मेरे है। हिसाब से 10% पॉपुलेशन वीगन होगी, 90% तो बेफिक्र होके जी रही है। मुझे नहीं लगता 10% भी वीगन है शायद। मैं अगर मैं देखूँ तो मेरे पास डेटा तो है नहीं, लेकिन शायद 1%, 1% से भी कम शायद वीगन्स होंगे पूरे दुनिया में। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक एटलीस्ट पर्सनली मैं तो ये कोई क्लेम नहीं करता कि वीगनिज्म दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। लाइक मैं तो ऐसा कुछ लाइक वाइल्ड क्लेम्स करता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एनिमल एग्रीकल्चर और लाइक जैसे हमको एनिमल एग्रीकल्चर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में पता है, एंड हमको प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में पता है। तो हम उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि लाइक जो लाइक फॉर एग्जांपल जितने एनिमल्स के लिए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और जितने एनिमल्स के ग्रोथ के टाइम पे, लाइक फॉर एग्जांपल जो काउज है दे रिलीज मेथेन एंड लाइक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक उनके ट्रांसपोर्ट से लेके उनके लिए पानी, उनका जो बाई प्रोडक्ट्स है उसका डिस्पोजल, ये सारे फैक्टर्स जब हम देखते हैं तब ऑब्वियसली जो प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर है दैट इज बेटर देन एनिमल बेस्ड एग्रीकल्चर। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक वीगनिज्म विल गेट रिड ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वीगनिज्म से लाइक सारी दुनिया के लोग सारे लोगों को खाना वगैरह मिल जाएगा। लेकिन वीगन लाइक जैसे लोग वीगन बनना स्टार्ट करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो जाएगी लाइक इवेंचुअली। लाइक अभी लाइक आई थिंक we have enough food to feed the entire, like I think I see I remember some statistic that like I'll have to look at it once again, but I think we have enough to feed the entire planet, but many of them are stuck in like bureaucratic black holes. तो वो सारी तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, वो सब तो कहाँ वीगनिज्म से सॉल्व होगा। वीगनिज्म का गोल तो नॉन ह्यूमन एनिमल्स तक ही सीमित है, लाइक वीगनिज्म का स्कोप नॉन ह्यूमन एनिमल्स तक है। तो जितना उन पे हो रहा है उतना ही हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम क्या ही कर पाएंगे। वीगन बारे में एक प्रॉब्लम है, वीगन एकदम खाली एक एनिमल्स के ऊपर बोलता है पर सारे एनिमल्स के ऊपर नहीं बोलता। जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रहा है, वो प्लास्टिक नदियों में जाता है, रिवर में जाता है, वहां भी तो एनिमल है, वो हम उस पर क्यों नहीं बोलते प्लास्टिक पोल्यूशन पे कि हाँ लोग इको जतिन फ्रेंडली जी, प्रोडक्ट यूज करें, इको बहुत फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करे, या घर के आगे पेड़ ज्यादा लगाए कि या बर्ड्स आके उन पे बैठे, क्योंकि पेड़ तो दिन करते जा रहे हैं। हम फॉरेस्ट कटिंग के ऊपर कुछ नहीं बोलते ही नहीं, हम खाली खाने पीने के ऊपर बोलते हैं। हाँ जतिन जी, हम मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा इस पे। जैसे आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है कि वीगनिज्म सिर्फ कुछ जानवरों की बात कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि काफ़ी नहीं है। मैं भी पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा देखेंगे तो जैसे ओशंस में भी, जो हमारे बड़े बड़े समुंदर हैं, दरिया हैं, उनमें भी जो पल्यूशन हो रहा है, अगर आप उस पर क्या चीज़ उसको पल्यूट कर रही है आप देखोगे तो आधे से ज़्यादा पल्यूशन फिशिंग नेट्स के कारण है।
जो हमारे पॉल्यूशंस में प्लास्टिक है, उसका अधिकांश जिस चीज की मात्रा है पॉल्यूटेंट की, वो है फिशिंग नेट्स। जब हम फिशिंग करते हैं तो उसमें जो अंदर छूट जाती है नेट्स पॉलिथीन की, प्लास्टिक की, वो है। जंगल काटने की आप बात कर रहे हो, बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। लेकिन आप समझो 50% से ज्यादा जो इंसान जंगल काट के पेड़ पौधे उगा रहा है, वो जानवरों के खाने के लिए उगा रहा है। लगभग 80% सोयाबीन जो हम उगाते हैं वो इंसानों के खाने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के खाने के लिए है। 1 किलो मांस जब एक जानवर पैदा करता है, 1 किलो मांस पैदा करने के लिए, किसी एक जानवर में बनने के लिए, उसको 17 किलो तक अनाज और पेड़ पौधे खाने पड़ते हैं। तो हम इतना सारा पानी एनिमल एग्रीकल्चर में दे रहे हैं, इतनी सारी जमीन जो हम जंगलों को काट काट के पैदा कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर से जो हम खाना बना रहे हैं, वो जो इंसान भूखे मर रहे हैं उनको ना खिला के जानवरों को खिला खिला के मोटा कर रहे हैं ताकि हम उनका मांस खा पाए। तो जो अपूता ने कही बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ वीगन होने से सारी दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन अगर हम वीगन हो जाते हैं तो हमारी 13 से 14% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो दुनिया भर में हो रही है, और मीथेन की एमिशन हो रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना से ज्यादा पोटेंट है एज अ ग्रीन हाउस गैस। और एनिमल एग्रीकल्चर से जब हम पशुओं का जो खेती कर रहे हैं, उससे इतना ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है जितना पूरे ट्रांसपोर्टेशन को कंबाइन कर दें उतने उससे भी नहीं निकलता है। अगर हम सारी जितनी रेलगाड़ी चल रही हैं, सड़क पे कारें चल रही हैं, टू व्हीलर चल रही हैं, नदियों में और समुद्रों में जो शिप्स चल रही हैं, उनमें से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन निकल रहा है, एरोप्लेन से जो निकल रहा है, उसको कंबाइन करके उससे भी ज्यादा है जो एनिमल्स को हम जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं उनके कारण जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। तो हाँ, इससे दुनिया नहीं बदल जाएगी, लेकिन हर साल अरबों जानवर मरना बंद हो जाएंगे, बहुत सारे जंगल कटने से बच जाएंगे, बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट समुद्रों में जाने से बच जाएगा, और हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और ये कहने के बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हमें सिर्फ वीगन बनने पे रुकना नहीं है, हमें और भी चीजों से हम कैसे समाज में बेहतरी ला सकते हैं उसके बारे में भी हमेशा सोचते रहना है। लेकिन ये एक चीज करके, हमारे फूड सिस्टम को चेंज करके, हम इतने सारे फायदे ले सकते हैं। ना सिर्फ हम मासूमों की जान बचा रहे हैं, बल्कि हम अपनी पृथ्वी को कितना ज्यादा फायदा दे सकते हैं इसके कारण। चलो ये तो एक बहुत बड़े लेवल की बात होगी, मतलब जो मतलब बड़े इम्पैक्ट है। मैं ग्राउंड पे बात करता हूँ, जो ग्राउंड पे हम जैसे स्ट्रे काउस घूम रही है भूखी प्यासी, जो डॉग घूम रहे हैं उनके साथ क्रूअल्टी हो रही है, उनके ऊपर कोई राइट्स नहीं है, उनके ऊपर कार चला देते हैं लोग। और जो बर्ड्स होती है, फायर वर्क्स होते हैं, उस पर कई बर्ड्स मर जाती है। और जो जैसे रिवर में से यमुना गंगा में तो पूछो ही ना हाल क्या है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो रील आती है, कोई स्लोटर हाउस में पिग्स, कोई काउज, कोई कुछ भी है, उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं। और जो ये वाली रील्स होती है इन पे कोई व्यूज ही नहीं होता, ना कमेंट होते हैं। हाँ मतलब इनमें से हमारा ज्यादा कितना, ध्यान उन बड़े लेवल की चीजों पर है, हम छोटे ग्राउंड पे लेवल पर हम मतलब बहुत कम ही ध्यान देते हैं, पर वो भी जरूरी है। हाँ लेकिन अगर आप किसी भी वीगन से बात करोगे, मुझे नहीं लगता है कोई भी बोलेगा हाँ ये सब ठीक है, सही है, चलने दो। हम सो हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हम कर सकते हैं एक इंडिविजुअल लाइफ में। लाइक मैं गंगा के पोल्यूशन के बारे में मैं क्या ही उखाड़ लूंगा, मैं बोल के क्या ही उखाड़ लूंगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल लेवल पे जो भी होता है, आई कैन प्रॉब्ली वोट फॉर बेटर गवर्नमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरे हाथ में ये कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे जो डेली एक्शंस जो है उससे मैं गंगा साफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे जो डेली एक्शंस है, आई कैन एटलीस्ट नॉट अब्यूज एनिमल्स थ्रू दोस एक्शंस। सो जो तो मतलब जतिन आप कह हमारा रहे हो, फोकस, हाँ हमारा फोकस है कि इंडिविजुअल इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब हमारे इंडिविजुअल हर एक के जो लाइफ में हम जो एक्शंस करते हैं, जैसे हम खाना, हमारा खाना है, हमारे जो कपड़े हैं, जो भी हम खरीदते हैं, इन चीज़ों पे हमारा कितना कंट्रोल है और उसका क्या इम्पैक्ट है, हम उस पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन चीज़ों को सही करारते हैं, मतलब या फिर हम बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक कोई आपको वीगन ऐसा नहीं बोलेगा।
हाँ, तो मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हो जतिन जी, अगर जो सड़क पे कोई गाय पन्नी खा रही है या कोई गाड़ी चला के जानवरों के ऊपर से जा रहा है, तो हमें उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हमारे एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है। और जब हम वीगन होते हैं तो वो सिर्फ इतना है कि हम दिन में 3 टाइम जब कुछ जानवरों से आने वाला खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें किसी की जान जा रही है, तो हम वो खाने की जगह कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें किसी की जान नहीं जा रही है, उसको दर्द नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल एक्शन है। जो आप कह रहे हो वो मॉरल वर्च्यू हो गया कि हम ये भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे वीगन्स करते भी हैं, रेस्क्यूज और अडॉप्शन ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और हम इसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सिर्फ वीगन्स को ही करना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है, सभी को एज अ सोसाइटी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये चीज नहीं भी कर पा रहा है तो उसका ये जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि तो फिर हम अगर ये नहीं, इनको गाय भैंसों को नहीं बचा पा रहे हैं पन्नियां खाने से, तो हम मुर्गी भी मार के खाएंगे, हम दूध भी पिएंगे। उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। एक कमेंट है, I like how Rajeshwar uncle ignored everything. Can you pin this? Uh, yes, everything Appoota was saying Swanar about wild animal suffering and instead just came up and said deforestation galat baat hai bahut. I don't think Appoota anywhere advocated कि deforestation अच्छी बात है। Rewilding पे हमारा डिस्कशन हो सकता है। Rewilding is a separate topic and deforestation and afforestation are completely separate topic. Am I right, Appoota? Would you agree? More or less, but I think, like, I don't think I'm particularly opposed to deforestation in like the grand scheme of things. So like you could have cases where deforestation is bad, but like on the more like on the net. Uh, but I'm not really in favor of rewilding because like we have wild animal suffering. So if we are going to be rewilding, then we're going to be increasing that, and that's not something I'm in favor of. So yeah. Yes, I think एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी, आई थिंक येलोस्टोन से रिलेटेड, जहाँ पर जो कार्निवोर पॉपुलेशन थी विच वाज कंसिडरेबली लेस और नॉन एग्जिस्टेंट, एंड जो वहाँ पे herbivores थे, they were very happy, they were roaming around, वो सबसे आके बहुत easily मिलते थे and relatively stress free life उनकी रहती थी। But then some conservation efforts and कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई गई कि वहाँ पे जो प्रेडेटर्स थे उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया, एंड उसके बाद द स्ट्रेस लेवल्स ऑफ दीज herbivores they went high, और you could see कि वो मतलब their life became more miserable. So it's a very interesting debate. So yeah, बाकी सब Yeah. ठीक है यार। अंकल मत लिखो यार रोसवाल, बाकी तो ठीक है। बाकी बोल लो जो, अंकल मत लिखो। सो जतिन जी, और बिल्कुल आप पूछिए, आपको क्या लगता है जो अभी हम लोगों ने बोला उसके बारे में, और कुछ आपका डाउट है? मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, जैसे जी। दो प्रकार के डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एक हिडन डिस्ट्रॉयर्स, एक लाइव डिस्ट्रॉयर्स। हिडन डिस्ट्रॉयर्स मीन्स जो घर में बैठे हैं, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मीट मांस अंडा खा रहे हैं, जो एसी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं, जो पोल्यूशन कर रहे हैं। ये दिखता नहीं है पर ये बहुत खतरनाक चीज़ है अर्थ के लिए और नेचर के लिए, एनिमल के लिए। और एक लाइव डिस्ट्रॉयर्स है, जो मतलब जंगलों के पेड़ काट रहे हैं, जो मतलब अपनी पोल्यूशन फैला रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो एनिमल क्रूरटी कर रहे हैं, टॉर्चर अब्यूजिंग कर रहे हैं, वो शरेआम दिखता है, ये लाइव डिस्ट्रॉयर्स है। हम हिडन डिस्ट्रॉयर्स है, वीगनिज्म, मिनिमलिज्म, तो हम उनको रोकते हैं कि वीगन बने, मिल्क प्रोडक्ट यूज़ मत करें, एनिमल प्रोडक्ट यूज़ मत करें, और ये चीज़ें मत करें, इन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम लाइव सेवर्स नहीं बन रहे, जैसे लाइव डिस्ट्रॉयर्स के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सामने पेड़ काट रहा है, हम उसे जाके रोकेंगे नहीं, हम इंटरनेट में उसकी वीडियो डाल देंगे कि ये पेड़ काट रहा है, और उस पर कमेंट आ जाते हैं, अरे सैड, सो सैड। और जैसे क्रूरटी होती है उस पर वीडियो बना देते हैं, हम ये हो रहा है, कोई हॉर्स के ऊपर पीछे सामान ढो के लेके जा रहा है, हम उसे नहीं रोकते। तो हम वीगन कैसे हो गए हम, कि हम जब लाइव सेवर्स नहीं बन सकते, हिडन सेवर्स बने हुए हैं। समझ आई बात?
हाँ, थोड़ी बहुत समझ आई मुझे, जैसे बट लाइव सेवर जो दिखता है हमें, मतलब जो हो रहा है सामने आंखों के सामने, हम उस पे थोड़ा स्लो है। जो हिडन हिडन डिस्ट्रॉयज हैं, जैसे जो मतलब दिखता नहीं है पर डिस्ट्रॉय हो रही है, पर हम उस पे ज्यादा बोलते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। हम थोड़ा लाइव पर हम मतलब ग्राउंड पे भी फोकस करें, लोगों को इकट्ठा करके ना प्रोटेस्ट करें। जैसे कॉलेजों में जाके वहाँ पे हम लगातार बैठे रहे। हम एक दिन में प्रोटेस्ट करने जाते हैं, मार्च करने जाते हैं, रात को आके खा पी के हम सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही से स्टार्ट होता है। तो हम मतलब हार्ड वर्क नहीं हो रहे, थोड़ा हम मतलब बहुत स्लो काम कर रहे हैं इस पे। आपकी बात सही है जतिन जी, जितना हो सके जितना भी हम कर रहे हैं वो बहुत कम है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अम, पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं जो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रोटेस्ट बल्कि एक्चुअल चेंजेस भी आ रहे हैं पॉलिसी में भी। एंड बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस भी बंद हुए हैं, बहुत सारी हाँ, एनिमल मैंने देखा है टेस्टिंग इंस्टाग्राम पे ना बंद एक हुए रील हैं। आई थी। बाहर के विदेशों के ना लोग ना वो स्लॉटर हाउस गए थे, वहाँ के सारे एनिमल्स को लेके आगे रेस्क्यू करके आगे। ये काम हम इंडिया में डेयरी फार्मर में जाके करना चाहिए। मतलब जितने भी देश के वीगन्स है ना, सबको इकट्ठा होके एक आवाज जुट होनी चाहिए कि अब हम नहीं रुकेंगे, अब जाना। जैसे किसान आंदोलन है, वो 2 साल लगातार बैठा रहा और उनकी जीत हुई अच्छे से। तो हम अपने इंडिया में ही कुछ ऐसा बड़ा इम्पैक्ट कर ले। पूरे मतलब वीगन्स अलग अलग है ना, जो इकट्ठे हो जाए सारे वो। हाँ, अच्छी बात है, आप लीड लीजिए इसमें, हम लोग सब जुड़ते हैं। मैं तो पूरा तैयार हूँ। हाँ, तो आप बिल्कुल लीडरशिप लीजिए इसमें। मैं ये भी बताना चाहूँगा इस माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं, कि बहुत सारे जतिन जी जैसे दे रहे हैं अच्छे अच्छे सजेशंस, हमें डेली आते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैशनेट बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं, लेकिन जब आप वो सजेशन दे रहे हैं उसके साथ में जो प्रोजेक्ट के लिए आप सजेशन दे रहे हैं उसकी आप लीडरशिप लीजिए। उसमें एनिमल सेव मूवमेंट आपको हेल्प करेगा, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग सब वॉलंटियर्स ही हैं, तो हाँ जी। ऑलरेडी बहुत सारा कुछ है हमारी प्लेट्स पे। जैसे किसी की जॉब है, किसी का कुछ, कोई स्टूडेंट है, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोग ऐसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप करो, ये चीज आप ही करो, आप जो अभी कर रहे हो वो गलत है, बेकार है, लेकिन अभी आप ये करो। तो वो चीज थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसा सामने से आता है जो बोलता है कि नहीं, मैं इसमें लीडरशिप लेता हूँ, आप मुझे बस इस चीज में हेल्प करो, आप इसको मेरे अपने पेज पे पोस्ट करो, आप हमें पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स और किसी चीज की हेल्प है मुझे, वो हेल्प करो, तो हम बिल्कुल करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जो प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहे हो उसकी लीडरशिप आप लो। हाँ जी, मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जो एनिमल सफरिंग हो रही है इससे मुझे रात को नींद नहीं आती। ये बहुत ज़्यादा थकान में है। और कई वीगन्स होते हैं वो खाली पोस्ट डाल के, स्टोरी डाल के, और रेस्टोरेंट में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उनसे मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये खुश खुश कैसे है ये लोग। सही है, मैं समझ रहा हूँ कि सेंस ऑफ इमरजेंसी है। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाउ। हम कैसे अपने आप को एक सिविलाइज सोसाइटी बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम हाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, जबकि हम इतना अन्याय अपनी आंखों के सामने होने दे रहे हैं। हम बच्चों को उनकी माँओं से अलग होने दे रहे हैं, हम उस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। और हम लोग विजिल्स में भी जाते हैं, कई बार तो मन करता है कि यार इसको बंद करो, कैसे भी करके रोको। तो वो मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग, जब आप देखते हो कि जो मेल बछड़े हैं उनकी डेड बॉडीज को सुबह लेके जाया जा रहा है, एंड सब सरेआम हो रहा है, सरेआम जानवरों को मारा जा रहा है। कई बार पावरलेस फील होता है, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। एक ना ग्रुप में नोटिफिकेशन आया था, वो दीक्षा मैडम है कुछ, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो 30,000 करोड़ रुपए दे रही है। मतलब इंडिया में जो स्लॉटर हाउस है, जो भी टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी के लिए ना, मतलब 3 गुना ज़्यादा क्रूरल्टी होगी अब। उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। तो वहाँ पे सबको पहुँचना है। 1000 की पॉपुलेशन है वहाँ पे, मतलब आनी चाहिए, तब जाके ये प्रोटेस्ट होगा। 30 मार्च को है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 1000 लोग आ जाएंगे तो बहुत सारी ये क्रूरल्टी जो है ये रुक जाएगी। मतलब सरकार सोचेगी कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। जैसे अभी पहले लाइव स्ट्रोक आया था, जैसे एज अगर पर अगर अगर लाइक मीट या डेयरी का डिमांड है, तो हाँ ठीक है, वो लोग ये वाला स्लॉटर हाउस नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एनिमल्स बच जाएंगे। लाइक
जब तक डिमांड है वो लोग कोई और तरीके से उनको काट लेंगे। तो इस एक इसको रोक के कुछ लाइक मुझे कोई ये सब बड़ा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। लाइक वी दैट्स इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल इम्पैक्ट पे फोकस करते हैं। इट्स लाइक दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन गेटिंग पीपल टू गो वीगन एंड गेट रिड ऑफ दैट डिमांड। इंडिया सरकार डेवलपिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। डेवलपिंग मीन्स डिस्ट्रॉयर। डेवलपिंग हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है जहाँ भी पेड़ होते हैं, क्योंकि रोड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, कार से ज़्यादा हो गई है, रोड चौड़ी चाहिए और हम पेड़ को काटते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पे ना रोज़ मतलब वो मुझे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड में ये पेड़ काट जा रहे हैं, रोज़ इतने पेड़ काट गए, इतने पेड़ काट गए, क्योंकि सड़क चौड़ी चाहिए। और वहाँ के जो एनिमल्स है वो भेगे हो जाते हैं, और वो सोसाइटी में जैसे कई बार न्यूज़ सुनी होगी आपने, टाइगर आ गया सोसाइटी में, हल्ला गुल्ला मचा दिया, उसे इंजेक्शन दे के डांट दिला के जू में भेज दिया। तो ये चीज़ रुकने वाली मुझे लगता है, ये चीज़ नहीं रुकेगी, डेवलपिंग नहीं रुकेगी। हाँ मतलब अगर गवर्नमेंट को उसके लिए वोट्स मिलते हैं तो लाइक ऑब्वियसली वो लोग करेंगे। और आपका क्या ख्याल है कि बॉलीवुड विगन बन जाएगा? क्या आप कौन बनेगा क्या? बॉलीवुड इंडस्ट्री विगन बन जाएगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री? मुझे नहीं पता है। शायद अगर जैसे ज्यादा से ज्यादा आम लोग जैसे वीगन बनेंगे तो शायद वहां पे भी प्रोपोर्शनली वो लोग बढ़ेंगे। बट अगर अगर पूरी दुनिया एक दिन वीगन बन जाएगी तो फिर वो लोग भी बन ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया जब विगन बनेगी तब तो कई जन्म लग जाएंगे हमें। पता नहीं। हाँ अगले 50 साल में भी हो सकता है, अगले 100 साल में भी हो सकता है। हम कुछ बता नहीं सकते। क्योंकि जो दुनिया का पहला विगन था, जिसने पहले से शुरुआत की थी, वो तो चला गया, वो मर गया। उसने आगे सबको विगन बनाया, एक एक करके विगन बना। तो हम जैसे स्लो स्पीड में जा रहे हैं तो इतने तो टाइम लग जाएगा। हाँ, हो सकता है हमारी जैसे लाइफ टाइम में ना भी हो। हाँ, जैसे मैंने 10 जनों को विगन बना दिया अपनी पूरी लाइफ में, 10 जनों को विगन बना दिया, और उन्होंने 10 आगे लोगों को विगन बना दिया, और उन्होंने 10 आगे लोगों को बना दिया, तो मैं तो रहूँगा ही नहीं। तो आगे ये चलता रहेगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने एक बार ये पूरा विगन बन जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हो? उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? उत्तराखंड गदरपुर। अच्छा, वहाँ पे मतलब जो एनिमल सेफ का चैप्टर चालू कीजिए, आप एक्टिविज्म चालू कीजिए, और दिल्ली के प्रोटेस्ट में भी आप आइए। आप, मैं भी कोशिश करता हूँ, हम लोग भी सब आते हैं एक साथ मिलके। अच्छा आइडिया मैं है। यहाँ पे थोड़ा एक्टिविज्म कर रहा हूँ, पर हाँ, एक्टिविज्म वो लाइव करना वो मुश्किल है, क्योंकि मैं अकेला हूँ ना, तो कोई साथ देने वाला है नहीं वैसे यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम लोग हैं साथ देने के लिए। आपको पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स या और भी कुछ आपको हेल्प चाहिए, हम लोग करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि माँ का दूध मूवी देखी है आपने? हाँ जी, देखिए। वो माँ का दूध मूवी की हम लोग स्क्रीनिंग करा रहे हैं पूरे इंडिया में। बहुत बढ़िया, बहुत कॉलेजेस बढ़िया। में, कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज में, कहीं पे भी, क्योंकि वो मूवी में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, जो हम आउटरीच पे या जनरली किसी से बात करके उतना एफिशिएंटली नहीं समझा सकते जितना वो मूवी के थ्रू समझा सकते हैं। तो वो मूवी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, मान लो प्रोजेक्टर आपको रेंट पे लेना है, कुछ आपको दूसरी हेल्प चाहिए, तो हम लोग उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा कोई वॉलेंटियर आपकी सिटी में आकर भी हेल्प करेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप लोग अरेंज कीजिए जो देखना चाहते हैं मूवी, जो अवेयरनेस थोड़ा पाना चाहते हैं, उसके बाद आप पूरा, हम लोग हेल्प करेंगे आपको। मैंने खुद इसके ऊपर एक मूवी लिखी है, ह्यूमन्स एज। मैं राइटर हूँ ना, मैं घर बैठे मूवी लिखता रहता हूँ। तो मैंने वीगन ऊपर के, मिनिमलिज्म के, एंटी नेशन ऊपर ना ह्यूमन्स एज मूवी लिखी है। जैसे पहले आइस एज आई थी धरती पे, फिर डायनासोर एज आई, फिर वाइल्ड लाइफ एज आई, फिर एप्स आए जो मंकीज वगैरह, ओरेंगुटैन्स, उनके द्वारा हम इंसान पैदा हुए, इंसान में दिमाग आया।
जो इंसान है उसने डेवलपिंग की, टेक्नोलॉजी बनाई, और जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, इन्होंने वाइल्ड लाइफ और एनिमल लाइफ का नाश कर दिया। इसके ऊपर मैंने मूवी बनाई है, मतलब राइटर लिखी है, वो मैं थोड़ा वो करना चाहता हूँ उस पर काम। जतिन जी, आपके लिए एक कमेंट पिन किया है स्क्रीन पे, देख पा रहे हो आप? नहीं, पहले मुझे डिप्रेशन एंजाइटी हुआ करती थी, पर मैंने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, प्रॉब्लम तो उनकी बड़ी है, तो मैंने वो सब भूल गया। जैसे अब मैरिज फंक्शन में कितना सारा खाना वेस्ट होता है, और हम कोई ऐसा सोर्स बनाए कि वो सारा खाना भूखे एनिमल्स को खिला दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि अभी फ्यूचर की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे लाइव जो है ना, लाइव सेवर्स बनना है। मतलब जो भी कल आज के जो हो रहे हैं उनके लिए मैंने कुछ करना है। फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, लोग विगन बने ना बने, मतलब जो लाइव सेवर्स हैं, डॉग्स, बर्ड्स, कैट्स, स्नेक्स, मतलब एवरी एनिमल, उनके लिए मैंने डेवलपिंग के लिए मैंने वो बहुत कुछ सोचा, जैसे ये रोका जाए इसलिए। बस जैसे मुझे एक टीम की चाहिए, जैसे पीपल फार्म वाले हो गए, सुरेश व्यास हो गया जो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वीडियो बनाता है, आचार्य प्रशांत हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो जतिन जी, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। आप भी, अगर आपको YouTube पे या वीडियो एडिटर्स और सब सपोर्ट कर दिया जाए तो आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। और हम लोग हैं आपके सपोर्ट के लिए। आप आपके लेवल पे जो एक्टिविज्म चालू कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, और हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। धन्यवाद। नारुतो उजुमाकी हैं भाई हमारे साथ। Just value the abolition of animal rights violations more than your depression. Take up a purpose that is far greater than your own depression and concerns. होकागे साहब सही कह रहे हैं। Yeah. बट हैविंग सेड So दैट, आई थिंक अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी एक्टिविस्ट को लगता है कि कभी ब्रेक ले लेनी चाहिए तो ले लो यार, I मतलब। was yeah, gonna say that. यस। Like it's like so even though we have like a sense of emergency and all of that, we need to realize that uh, like you can't go crazy. We need sane vegans. We don't need people who are like insane. Um, so it's important to like take care of yourself and have good mental health habits, and take a break if you are feeling burnt out, and um, if you're feeling like you're not in a good place, and seek help basically. हाँ, कई बार एक्टिविज्म पे ऐसे एक्टिविस्ट आते हैं कि ऐसा लगता है कि ये ना आते तो ज्यादा फायदा होता जानवरों का, क्योंकि कई बार कुछ लोगों से बात करके उनका और गुस्से में ही आ जाए कोई भी कि हाँ. यार अगर वीगन ऐसे होते तो मेरे को बनना ही नहीं जिंदगी में वीगन। तो वो भी जरूरी है। कई बार इतना गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, और गुस्सा है तो उसको सही जगह चैनलाइज होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि आप नॉन वीगन से बात कर रहे हो और अननेसेसरीली उनको ऑफेंड करके और ड्राइव अवे कर दे रहे हो, एंटी वीगन बना दे रहे हो। तो इसीलिए अपनी मेंटल पीस पे ध्यान दो। जब तक आप खुद यहाँ पे ठीक नहीं रहोगे तब तक आप दूसरे को क्या समझाओगे। Yeah, like people will be like, oh, that vegan was really mean to me, that's why. नहीं, सही है। मतलब आप रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हो ना। आप अगर कहीं पे पोस्टर पकड़ के खड़े हो, आउटरीच कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, वीगन होने को कह रहे हो, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट, एटलीस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन की वो वॉलेंटियर कर रहे हो आप, उसके लिए उसका पार्ट हो। तो इट्स बेस्ट कि थोड़ी बहुत आप
सोच समझ के जाओ, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो, थोड़ा सा आप जिसके साथ जो पहले से एक्टिविज्म कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक कर लेता है, उसकी थोड़ी बात सुन के उसके बाद बात करना चालू करो, क्योंकि नुकसान नहीं करना। आप तो इंटेंशन अच्छा है आपका, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक्टिविज्म में भी हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम अलग अलग रहता है। मतलब अगर मान लो मुझे लगता है मैं बात ठीक से नहीं कर सकता हूँ किसी से, मेरा वो स्किल नहीं है, तो मैं फोटोज खींचूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, तो या पोस्टर पकड़ के खड़े रहूंगा, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, तो आई कैन स्टिल कंट्रीब्यूट इवन इफ आई फील दैट आई एम नॉट एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन प्रॉपरली, और मैं उसको इफेक्टिवली जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उस जॉब को, तो आई कैन व्हाइल आई लर्न दैट आई कैन डू समथिंग एल्स। अगर मैं ग्राफिक्स बना सकता हूँ तो मैं अच्छे ग्राफिक्स बनाऊंगा, मैं पोस्टर्स डिजाइन करूंगा, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बना सकता हूँ। बाय द वे कोई है एक्सपर्ट वेबसाइट वाला तो वी नीड हेल्प विथ poster makers or someone to volunteer for that as well, because सोशल मीडिया से आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो। जैसे जतिन जुड़े, और भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे इंटरेस्टिंग, तो हम ये घर पे बैठे बैठे कर रहे हैं। हम तो कल जुहू बीच पे है एक्टिविज्म वैसे, बट कम एफर्ट में ये हम इजीली कर सकते हैं। सोशल मीडिया में हमारी कुछ रील्स बिना किसी बूस्टिंग के ऑर्गेनिक रीच अराउंड 5 मिलियन की रही है, सेवरल अदर्स ऑर्गेनिक रीच अबव मिलियंस है। तो आप जो आपने छोटा सा एक्शन किया कहीं पे, उसको अगर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया होता, जो रिकॉर्ड कर रहा है वो तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके कारण वो इतने सारे लोगों तक पहुंच गया। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। जतिन, और कुछ है आपके पास कहने के लिए? नहीं, मेरे पास तो वैसे सवाल ही सवाल ऐसे पूछता रहूंगा तो सही नहीं लगेगा फिर ना, इसलिए। नहीं पूछो, कोई बात नहीं। नहीं, आप अपनी डिस्कशन कीजिए, मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं। एक बंदा आईजी पे कमेंट कर रहा है बीजेपी से जुड़ जा, उससे क्या होगा? बाय द वे हम लोग कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और भी कोई भी दूसरी पार्टीज हो, सभी के पॉलिटिशियंस के साथ में बात करके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड ट्रीटी का समर्थन करें, उसको एंडोर्स करें, जिसमें कि डिमांड्स ऐसी हैं कि आप एनिमल एग्रीकल्चर को और बढ़ावा देना बंद करें, नए नए स्लॉटर हाउस आप खोलना बंद करें, एनिमल एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करना बंद करें। जो आप सब्सिडीज एनिमल एग्रीकल्चर को दे रहे हैं उसमें उसको हटाकर प्लांट बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उनको आप सब्सिडी दें। और इसमें सभी पार्टीज के, अगर कोई सुनता है ध्यान से हम लोगों को, तो सभी पार्टीज के लोग इन प्रिंसिपल समर्थन में रहते हैं। और सारी दुनिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरवेंशंस, जैसे गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड शाउटिंग गो वीगन, वी आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन ब्रिंगिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल चेंज। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सिटी काउंसिल जो मान लो वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें से 50 किलो फ्लैश सर्व कर रहे हैं वो, तो लगभग 50 चिकन्स की जान जा रही है उसमें, और वो उसको रिप्लेस करके कुछ प्लांट बेस्ड देना चालू कर देते हैं एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। तो भले ही वो वीगन नहीं बने, लेकिन वो 50 जानें बच गई। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने मेन्यू में ऐसा चेंज कर देती है कि हम एनिमल बेस्ड मिल्क की जगह हम प्लांट बेस्ड मिल्क से स्विच करेंगे, उसमें हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम होगा, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी हम अग्रसर होंगे, और साथ में इतने सारे जानवर भी बच जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशनल चेंज से ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं, और इसका हमारे पास मेजर करने का भी तरीका हो जाएगा
अभी हम आउटरीच पे अगर जाकर बात कर रहे हैं तो हम मेजर नहीं कर सकते कि इससे क्या चेंज हुआ, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात कर रहे हैं तो हमारा जो इम्पैक्ट है वो मेजरेबल हो सकता है. सर एनजीओ के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है? इंस्टाग्राम पे कोई पूछ रहा है, एनजीओ के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता यार, आप एनजीओ बना हुआ है ऑलरेडी, आप वॉलंटियर करो. बहुत सारे बहुत सारे एनजीओ ऑलरेडी खुल गए हैं, तो अगर उनमें से किसी से आप जुड़िए, जो भी आपको अच्छा लगता है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो आप उनसे जुड़िए. अगर आप वीगनिज्म रिलेटेड, एनिमल राइट्स रिलेटेड, प्लांट बेस्ड ट्रीटी या फूड सिस्टम्स रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हमें डीएम करें, हम लोग हेल्प करेंगे. और कुछ पता है क्या अरविंद, आपको कुछ एनजीओ का क्या प्रोसेस करना पड़ता है? I have no idea. मतलब मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि like there are like so like you can have like an NGO, like you can register it with the government, and then like you have to wait like 3 years, and after 3 years you can get like international funding. So that's kind of all I know about it. वॉलेंटियरिंग में क्या क्या पोजीशंस अवेलेबल हैं? पोजीशन आप वॉलेंटियर बनो, आपके लिए बना देंगे जो पोजीशन आप बोलोगे. हेड वॉलेंटियर बना देंगे आपको. अभी अरविंद जैसे इंचार्ज है हमारे लाइव सेशन के, वॉलेंटियर इंचार्ज. मैं वॉलेंटियर हूँ जो जैसे आउटरीच या व्हाटएवर, मतलब आपको जो ठीक लगे हम आपको हेल्प करेंगे, एज लॉन्ग एज वो हमारा गोल को सर्व करने में हेल्प करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करता हो वीगनिज्म के बारे में. कैसे ज्वाइन करें एनजीओ? आप हमें मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, एक्स, किधर पे भी आप हमें मैसेज कीजिए. आपका लोकेशन और आपका फ़ोन नंबर भेजिए, हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, हेल्प करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, पोस्टर्स, बैनर्स और भी कुछ जो आपको आउटरीच के लिए या जो भी आपका गोल है, स्क्रीनिंग के लिए जो भी लगेगा हम करेंगे. अच्छा, टेक्निकल स्किल्स, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर. वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर तो चाहिए ही, वो तो अभी क्रिटिकल है. तो नारुतो, आई डोंट नो आपका रियल नेम क्या है, बट अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो हमें हेल्प चाहिए यार, वेब डेवलपर की भी चाहिए. हम लोग बहुत सारी पोस्ट बना सकते हैं अच्छी अच्छी, तो आप बिल्कुल डीएम कीजिए, हम आपको रीच आउट करेंगे उसमें. कैन यू प्लीज गाइड, इज देयर एनी कम्युनिटी वर्किंग इन पंजाब? यस, पंजाब में कुछ वीगन्स तो हैं, आई नो सम पीपल. कुछ कुछ एक्टिविज्म भी होता है उधर, बहुत रेगुलर नहीं है लाइक मुंबई, बट होता है, काफी कुछ है. देर आर अ लॉट ऑफ वीगन्स इन पंजाब. कहाँ से हो आप? कहाँ से हो आप? कहाँ पर हो अभी अरविंद? मैं तो मुंबई में हूँ. Oh, so kahan se ho is a very complicated question. Well, the question is straightforward. The answer is complicated. So I am like my mother tongue is Tamil, and I was born in Mumbai, brought up in Mumbai, more like suburban areas of Mumbai, and but my native place is in Kerala. But I'm living in Kolkata, where I'm doing my PhD. So well, I'm not even living in Kolkata. This is like a suburban area outside Kolkata. But yeah, so
It's yeah, like I think I've given you enough to answer the question, I guess. Is there any position for research? I can help in research work. What kind of research? Yeah, I mean, we worked on a report before COP28. It's called Safe and Just. तब बहुत सारी research चल रही थी, and we want to update that report with the latest available credible scientific information which is out there before COP29. So if you can help us with that, that will be really great. If you can find some recent peer-reviewed credible science on animal agriculture and how it affects our food systems and our planetary boundaries, that would be really helpful. कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, कोई वो नहीं है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. We are all volunteers. We are, जैसे I reached out to Aravind here कि भाई, you did a great debate last time, let's do it again, let's go online, and he graciously agreed. तो ऐसे ही चीजें होती हैं, मतलब देर कोई वो डॉक्यूमेंट्स कोई किसी के नहीं पूछता है, या कुछ ऐसा बहुत फॉर्मल लंबा प्रोसेस नहीं है. जस्ट फील फ्री टू रीच आउट. नारुतो ये भी पूछ रहे हैं और क्या क्या है वॉलंटियर के लिए. कोई हमें चाहिए जो गूगल एड ग्रांट्स मैनेज करे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास वो है, बट कुछ टेक्निकल नो हाउ चाहिए कि जिसने पहले एनजीओज के साथ में काम किया हो और वो हमें उसमें हेल्प कर पाए. और ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर तो मैंने बताया ही. और साथ में नॉर्मल आउटरीच आप कर सकते हो, आपके लोकल एरिया में मूवमेंट बिल्डिंग कर सकते हो, और लोगों को जोड़ सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो, लोगों को हैंड होल्ड कर सकते हो कि कैसे Movie वो screening. मूवी स्क्रीनिंग करा सकते हो. So अच्छा, I think Arvind, it's been 1.5 hours already. Yep. Oh, there's a question. मैं अपने एरिया में डॉग्स को फीड का काम करता हूँ और वीगनिज्म सपोर्ट करता हूँ. आप इस पे मेरी क्या मदद कर सकते हैं? आप इनको बोलिए कि हमें डीएम करें. आपसे फ़ोन पे बात करके डिटेल में डिस्कशन करना बेटर होगा, क्योंकि लाइव में डिस्कस करना मुश्किल होगा कि क्या मदद कर सकते हैं. डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं. आपके आइडियाज़ जानेंगे और उसको कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से, एनिमल राइट्स के गोल से कैसे अलाइन करके क्या कर सकते हैं. डेफिनेटली वी विल फिगर समथिंग आउट. Yeah. So I think we should do it more often. What do you think? Yeah, I guess we should. Especially Hopefully, you. as we get the ball rolling, hopefully more, uh, more people would want to ask like debate or something. Yes. And this will stay on our pages forever now. जैसे ये live खत्म होगा, this will be posted. तो I could already see, especially on YouTube, engagement काफ़ी आ रही है. People are liking this. And these things seem to grow week by week. जैसे ही हम ज़्यादा लाइव करेंगे तो more and more people join and ask questions. as जो लोग देख रहे हैं वो शेयर कीजिए कि ऐसा कुछ हो रहा है. जो भी कई बार हम नए नए वीगन बनते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल होते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर अरविंद है,
तो जो भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं या इरिटेटिंग लग रहे हैं, तो आप उनको ये लिंक भेज दीजिए कि भाई इससे पूछ ले, तू इससे डिस्कस कर ले, तेरा जितना होशियारी है तू अभी पूछ यहाँ पे। तो अच्छा है, मतलब क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। Yeah, that'll be nice. We can also like react to some anti-vegan content, I guess. That'll be Yes. also interesting. उसका थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाउ वी कैन डू दैट इन अ लीगल वे, जो मतलब अगर हम Yeah. लाइक नहीं होनी चाहिए। Yeah. तो आई थिंक Yeah, we'll कुछ have to like पॉलिसीज figure out वगैरह। how to say it nicely. हाँ बट नहीं, नाइसली नॉट नाइसली तो ठीक है, बट कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट दैट इज व्हाट आवर कंसर्न इज। वी कैन बी honest about what we feel. If someone is talking absolutely rubbish, we can be honest about that, no problem. But Yeah. copyright strike hoga, to then if that content is removed, then makes no sense. Right. Yeah, I agree. बट लोग करते हैं बहुत सारे। लेट्स सी कि वो कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलो देन, दैट्स इट फॉर मी। Okay. Yeah. Yeah. आपका That's क्लोजिंग रिमार्क्स कुछ हो तो श्योर। yeah. Not really. Nothing in closing per se, but like I would encourage all like the vegans to, I guess, introspect yourself. Like, yeah, like you've done a good job becoming vegan at this point, but like we need to do more. Let's start introspecting about our values. Let's start learning the tricks of the trade. Where there are certain skills that we need to learn in order to be better than what we are, and that should be one of our goals, to be a better person than we were yesterday. Um, and there are certain things that we can do, like learning formal logic, getting some familiarity with research methodology, learning statistics. These are some of the things that we can do to be better and be more effective or more persuasive for the animals. We can talk about all the empirics that are associated with animal agriculture. We can talk about all the empirics associated with health or like vegan diets or whatever. And that, because that kind of stuff, I'm not saying that this is like veganism is about health or anything like that. I'm more of an ethics person, but these are usually concerns that are brought up by people, and we need to be ready to address those concerns. So yeah, that's pretty much it. सो एक क्वेश्चन है मेरे लिए, एक्टिव इन प्लान बेस्ड ट्रीटी कॉप 28। कॉप 28 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, 28th इटरेशन था उसका। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए UN की बॉडी है। एंड इसमें दुनिया भर की कंट्रीज की पार्टीज आती हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। एंड दे supposedly they are working on how to achieve our sustainable development goals and stop climate change. But वहाँ पर I feel a lot of action which needed to be taken was missing, and that is what we were trying to convince them of. We also had a couple of protests over there at the venue कि आप अगर क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हो और आप एनिमल एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, तो फिर जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है आप वहाँ पे बैंडेड लगा रहे हो। और आप अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट बोल ही नहीं सकते अगर आपकी प्लेट पे मीट एंड डेयरी है। एंड वहाँ पर बहुत सारे मीट एंड डेयरी कंपनीज भी थे जो अपना प्रोपेगेंडा कर रहे थे, बट उनके सेशंस में हम लोग ने जाकर उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे। हमारे पेजेस पे उसके वीडियोस भी डाले हमने। बहुत अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस थे उनके लिए। प्लस हम लोग दुनिया भर के लीडर से जाकर मिलकर उनको डिस्कशन करते हैं कि कैसे एक प्लांट बेस्ड ट्रीटी को साइन करके आप एक प्लांट बेस्ड फूड सिस्टम्स पर जब आप शिफ्ट करोगे
तो आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रीच करने के लिए एक सही कदम बढ़ा सकते हो। एंड उसमें उस डायरेक्शन में जो कॉन्टैक्ट्स हमने वहाँ पे डेवलप किए हैं उनके साथ में आगे काम भी चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आगे आएंगे। बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत इजी एक्सेस मिलता है आपको, जिनसे आप शायद आपकी कंट्री में आप महीनों महीनों नहीं मिल पाओगे, या आपको 50 कंट्री ट्रैवल करना पड़ेगा जितने लोगों से मिलने के लिए, वो आपको कॉप के ब्लू जोन में एक जगह पे मिल जाते हैं। तो भले ही उन लोग वहाँ पे उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, बट हम लोग पॉलिसी में चेंज लाने के लिए उनको कन्विंस कर सकते हैं, अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट कोशिश कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है बहुत सारी सिटीज़ में। एंड बहुत अच्छी अभी चीज़ें आएंगी। तो यस, दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविज्म। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो हम लोग आउटरीच पे करते हैं, विच इज़ मोर एनिमल सेंट्रिक, एनिमल राइट सेंट्रिक। यहाँ पे एनिमल राइट्स में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे, इट्स मोस्टली अबाउट क्लाइमेट। तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल चेंज की तरफ आपको बात करनी होती है, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन morality that much. So but yes, the science is on our side. Science is very clear that animal agriculture is extremely bad for the environment. So even if somebody is having, say, imported plant-based stuff in their country, it is still better than having locally produced flesh. So that is how clear the science is. And even जो meat and dairy companies हैं, they recognize this कि animal agriculture is bad for the planet, but फिर भी they feel somehow कि this is too big a change for individuals to make, कि आप लोगों से expect नहीं कर सकते कि आप vegan बनो। But we know from experience कि it is not that difficult. I mean, इतना सब कुछ है तो क्यों नहीं। Actually, like for it's only recently that I've started like eating the vegan alternatives. But like for the first 5 years that I was vegan, I've never consumed any vegan. I have not personally purchased any vegan alternatives to eat. Um, so yeah, I could just get by, no problem. हाँ सही बात है। मैं भी जब वीगन हुआ था, मैं हॉस्टल में रहता था, मैं कॉलेज के हॉस्टल में था। बट लकीली इंडिया में तो दाल रोटी सब्जी सलाद अचार ये तो आई थिंक मिल ही जाता है। जब जिस दिन नॉन वेज है, एग्स है, आप वो चीज़ नहीं खा के कुछ वेज खा रहे हो, कुछ आप ऑल्टरनेटिव, तो तब कुछ मिलता भी नहीं था ना, पैसे होते थे कि आप खरीद लो जाके कुछ महंगा सा चीज़ या कोई मिल्क। हालांकि आजकल बहुत कम रेट पे भी मिलने लगे हैं और पैरिटी भी आने लगी है, बट स्टिल आई थिंक जब आपका कन्विक्शन रहता है कि अगर मैं ऐसी लाइफ जी सकता हूँ, अच्छा खुश और हेल्दी रह सकता हूँ बिना किसी को मारे, तो क्यों नहीं। Yeah. This is also part of volunteering, या this is related to some kind of job basis, somebody is asking on Instagram. तो यार सी, I have a full-time job in construction. That is how I pay my bills. And I do this as a volunteer. Since it is a grassroots movement, most people who are associated with us are volunteers only. It is difficult for NGOs, especially NGOs working in the field of farmed animals, because लोग उतना ज़्यादा इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते हैं, एंड इस चीज़ में उतना डोनेशन भी नहीं है जितना शायद एक किसी और सोशल वर्क में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उधर पे डोनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फार्म्ड एनिमल्स के लिए स्पेशली बहुत कम डोनेशंस होते हैं, एंड इट इज़ मोस्टली ड्रिवन बाय वॉलंटियर्स, ग्रास रूट्स एक्टिविस्ट्स। तो we need more and more volunteers who are very passionate about this cause. That is how it will grow, क्योंकि you cannot, you know, employ
make a movement out of employees. That is, I don't think that is possible. Nahi? So with that, thank you, Arvind, for taking out No time. problem. Yeah, It absolutely. No was, problem. My yes, it pleasure. was amazing having you Yeah. online. You always do a great Yeah. job. Yes. Thanks a lot. Yeah, I there hope, wasn't much action today, but hopefully sometime later. Yeah. yes, I hope that you are able to take out time more often and we can Yep. make this a regular thing, maybe a Yep. weekly or bi-weekly, or we can have more people. Uh, yes. Yep. We can figure something out. Yeah. Yes. Thanks a lot. Yeah. No Thank problem. you, everyone.